Very good morning, 8th class. Today we will cover digi for your 10th chapter in your history book, Changing World of Visual Arts, right? From the 18th century, a stream of European artists came to India, bringing with them new styles and conventions in painting. ठीक है, यूरोपियन अपने साथ नई One of पेंटिंग्स लेके these आए was थे, the concept टेक्निक्स. of realism, wherein the artists aimed to capture on canvas an exact reproduction of real life. ठीक है, तो ये जो यूरोपियन European आर्टिस्ट artists अपने साथ आए थे, ये किस तरीके की पेंटिंग करते थे जो कि रियलिज्म के काफी क्लोज होती थी, काफी रियल लगती थी. ठीक है. also introduced the technique of oil painting, one of which Indian artists were unfamiliar with. Oil painting allowed European painters to produce realistic images. The European painters who came to India chose varied Indian subjects for their paintings. However, the underlying theme that defined their work was the superiority of the British culture and people. ठीक है, ये चीज हमने चैप्टर में रीड आउट करी थी कि ये जो पेंटिंग्स बनाते थे तो ये उसमें क्या दिखाते थे कि सुपीरियरिटी दिखाते थे ब्रिटिशर्स की ब्रिटिशर सुपीरियर है और इंडियंस इंफीरियर है. ठीक है, तो हमेशा इनकी पेंटिंग्स में ये चीज रहती थी. Their paintings became widely popular in Europe and also helped shape Western perceptions of India. Imperial art fell into three categories. They were picturesque landscape paintings, portraits, and history paintings. ठीक है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई पेंटिंग है, लैंडस्केप होता है, कोई सीनरी है, कोई जैसे कोई पहाड़, नदियाँ, ग्राउंड, इस तरह की पेंटिंग. पोर्ट्रेट्स होती है कि किसी पर्सन की जो इमेज बनाई जाती है, ठीक है, उसको पोर्ट्रेट कहते हैं. तो ये तीन तरह की इंपीरियल आर्ट फेमस थी. How do you think European painters depicted India in their landscape paintings? Many British artists painted picturesque landscapes of India. Chief among them were Thomas Daniel and his nephew William Daniel. ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने The चैप्टर में पढ़ा था. एक अंकल है और एक उसका नेफ्यू है. Daniels came to India in 1875 and stayed there for 7 years. Traveling from Calcutta to northern and southern India. यहाँ पे ट्रेवल करते हैं अलग अलग भागों में भारत के. Their large oil paintings on canvas were very popular among the British public in Britain. ठीक है, इनकी जो पेंटिंग्स थी, बड़े बड़े कैनवास पे जो ये पेंटिंग बनाते थे, वो ब्रिटेन में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. So what kind of picture of India did the Daniels convey in their paintings? In their paintings, the Daniels often showed India as an ancient civilization that once enjoyed great glory, but was now in ruins. The Daniels also created numerous paintings of late 18th century Calcutta with wide avenues and majestic European-style buildings. Hence, in their paintings, the Daniels conveyed the notion that India was a decaying civilization that had been improved and modernized under British governance. What is a portrait? पोर्ट्रेट क्या होता है? देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब एक पर्सन की एक पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को ड्रॉ किया जाता है, उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं. A portrait is a picture of a person in which the facial expression is very prominent.
portrait painting became immensely popular in colonial India. The rich and the powerful, both British and Indians, commissioned large and lifelike portraits. And due to the growing popularity of portrait painting, many European portrait painters came to India in search of profitable commissions. One of the most famous of the visiting European painters was Johann Zoffany. In his paintings, Zoffany often showed the British as superior and imperious, living ये भी क्या करते थे जोफानी, अपनी पेंटिंग्स में ब्रिटिशर्स को सुपीरियर दिखाते थे, ठीक है, कि वो बहुत लेविश है, बहुत सुपीरियर है, इस तरह की पेंटिंग बनाते थे. in a life of luxury. During this period, the British had started posting residents in Indian courts who used to interfere in the affairs of the state. While some Nawabs resented this, there were others who believed in the cultural and political superiority of the British. ठीक है, तो ब्रिटिशर जो है ऑफर करते थे इंडियन नवाब्स को, लोकल रूलर्स को, कि हम आपको जो है किसी में आपकी जो मैटर्स है आपके एरिया से रिलेटेड, आपके स्टेट से रिलेटेड, उन पे एडवाइस करेंगे आपको, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए. तो कुछ नवाब तो इस चीज़ का अपोज करते थे, विरोध करते थे कि नहीं, हमें किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है. जबकि कुछ नवाब ऐसे थे जो ये मानते थे कि हाँ, ब्रिटिशर जो है वो पॉलिटिकली सुपीरियर है हमसे, ठीक है, और वी होप टू सोशलाइज विद द ब्रिटिश एंड अडॉप्ट देयर टेस्ट एंड स्टाइल. और वो मानते थे कि हाँ, हमें और ज़्यादा सोशलाइज होना चाहिए, और ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ, और उनके जो टेस्ट हैं, स्टाइल्स हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए. They hoped to socialize with the British and adopt their tastes and styles. These Nawabs began commissioning imposing oil portraits by European painters. तो ये लोग भी, ये नवाब भी अपनी ऑयल पेंटिंग्स बनवाने लगे यूरोपियन आर्टिस्ट से. Muhammad Ali Khan, the Nawab of Arcot, was one such Nawab. Although he lost a war with the British and became a dependent pensioner of the East India Company, he commissioned two visiting European artists, Tilly Kettle and George Willison, to paint his portrait, and gifted this painting to the King of England and the directors of the East India Company. The Nawab had lost political power, but the portrait allowed him to project himself as a royal figure. ठीक है, हालांकि ये जो है ब्रिटिशर से युद्ध हार गया था, फिर भी ये इस तरीके की पेंटिंग हमने बनाता है जो कि काफ़ी रॉयल लगती है, कि मानो ये अभी भी राजा है, और ये पेंटिंग बना के ये ब्रिटिशर्स को ही गिफ्ट करता है. There was a third category of imperial art called history paintings that depicted British victories in India.